Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We welcome you once again on the sets of ANN News channel. I am your host, official English commentator of J&K Qualifiers. I welcome you all for another. This is the quarter-final number 2 or match number of this J&K Qualifiers League organized by ANN News channel. And two teams fighting out against at this very venue of Ghani Memorial Stadium, Rajouri Kadal, Srinagar. We've got Friends 11 Pulwama, captained by Mr. Shirazwani. Got MCC Naidkhai, captained by Mr. Shanawaz Bashir. This is a very important match of this knockout stage, and both the teams would definitely love to register a victory to get a place in the semis. We've already got wins in the form of MLA Gymkhana yesterday, defeating Equisar Software Solutions. Let's wait who is going to be the second semi-finalist. We've got the match officials, two captains, and also we have got Mr. Tariq Ahmed Batsab, who is editor-in-chief and also the chief organizer of this very J&K Qualifiers. He has got a coin in his hands. Let's say who's going to call it speedy. Shanawaz Bashir, captain of MCC Naidkhai, is having the call. It's tail. It's head. Shiraz, मुबारक आपको, आपने टॉस जीता, क्या करेंगे आप? हम पहले बॉलिंग करेंगे। बॉलिंग करने की यहाँ पे खास वजह? एक्चुअली हमारे पास दो बॉलर्स थे, वो आज नहीं खेल पा रहे हैं, इसलिए हम चेज पे जाएंगे। जब बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन की, तो अपोजिट टीम को आपकी टीम ये स्कोर पे रेस्ट्रिक्ट करने की 140 145 तक हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, वो हमारे हिसाब से चेज करना आसान होगा। बात करेंगे जो यहाँ पे क्वार्टर फाइनल की बात हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी एक ऐसा नॉकआउट स्टेज है, मैच जीत गए तो आगे सेमीज में जा गए, आप हार गए तो सिंपली यू जस्ट हैव टू गो टू बैक टू होम। वो तो पार्ट ऑफ द गेम है, जितना हारना, लेकिन हम अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरह से कोशिश करेंगे, देखेंगे इनका, देखेंगे क्या टारगेट देंगे हमारे ऊपर, हम चेज करेंगे, कोई बात। चलिए, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। शहनाज, आपने टॉस हारा, लेकिन व्हाट डू यू से? You know, we were ready for bat first, actually, because the knockout game, it is a bit different from the last three games. So it was our wish to bat first and put up a good score on the board. Playing squad for today's match, all important knockout stage. Now we have one change. We have bring in one more all-rounder in the side, is Ayaz Maqbool, who can give you 4 overs up front or in the and can give you the finishing touches at the late of the batting. And talking about the pitch, it's surely assisting the batsmen. Surely we have got some good runs on the board. If we talk about last 3-4 matches, so you would like to put up a massive score on the board? Inshallah, hope so, because the boys are fresh. And they are very, and they have the good intensity, because it's a good tournament, good platform for the youngsters like Riyaz, Furqan and some of the other boys. So I think if we bat well, it is 250 to 60 wicket. And we will try to put up a good score. So best of luck for this very quarterfinals. So the news from the center is that captain of Friends 11 Pulwama, Shirazwani, has won the toss and has decided to bowl first in this all important quarterfinal number 2. We'll be shortly back with the live action after a gap of 10 minutes. Then you just enjoy your time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Stronger than you think. TCI Max Cement. ज्वेलरी तो सब खरीद लेते हैं, लेकिन खास ज्वेलरी खास लोग ही पसंद करते हैं। कारीगरी ऐसी जो मन को छू ले और खिदमत ऐसी जो दिल को छू ले। तो हमें खिदमत करने का मौका दे और तशरीफ लाएं असावीर ज्वेलर्स, कश्मीर का अपना ब्रांड, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, श्रीनगर।
Royal Concepts makes you royal. Royal Concept, Bacha Chowk, Lal Chowk, Srinagar. J&K 190001. मसाले तो बहुत हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very warm welcome and a very, very good morning to all of you. Out here we are live again on the sets of AN News channel. This is J&K Qualifiers League, second quarter final. Friends 11 Pulwama fighting against the likes of MCC Naidkhai. And just talking about the toss, it was won by the captain of Friends 11 Pulwama, Shirazwani. And he just takes the decision of just bowling first in this all-important quarter final number 2. And when we talked to him on the toss, he just mentioned that around 140, 150 would love to restrict to them. But talking about the captain, Mr. Shahnawaz Bashir, he was looking quite confident. And he said it's a wicket of around 240, 250. Both the teams have got with one change. And this action is about to be kick-started. Two batters out there in the middle, Mr. Jahangir Munna and Riyaz. And let's see who is going to start the proceedings from Prince 11 Pulwama. I'm your English commentator, Baba Nisar. I welcome you once again. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये आप MCC नाइदखाई की प्लेइंग 11 देख सकते हैं। जहांगीर मुन्ना, रियाज कोहली, फुरकान अहमद, आबिद मकरूर, फिरदौस मलिक, समीर अहमद, शबीर, शाहनवाज बशीर, अयाज मकबूल, मोहम्मद रफीक और लतीफ़ वानी, ये है प्लेइंग 11 में शामिल जो आज MCC नाइदखाई को बल्लेबाजी के लिए दावत दी गई है कि आप बल्लेबाजी कीजिए। वो क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, इसलिए मुझे लगता है शिराजवानी जो टॉस जीता इसलिए उन्हें फील्डिंग करने का जो डिसीजन लिया वो सही है, क्योंकि पता है कि ज्यादा कुछ विकेट में मदद है नहीं, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। Absolutely. This is going to be a very good decision as far as Shirazwani is concerned, just winning and opting to bowl first. They're going to go for the chase today. And out walks the two openers. We've already got one semi-finalist yesterday. It's Hamil Jimkhana Badgam defeating Equaso Software Solutions by a big margin of 75 runs. And let's see who is going to be the second semi-finalist of these two teams. We've got one more quarter-final in the afternoon session. That's going to be between T-Star Cricket Club and SSM Cricket Club. So stay tuned and connected to AN News channel for the live action. It's a cricket bonanza and a cricket show all here in this town. That's Kani Memorial Stadium, Rajouri Kadal, Srinagar. Jahangir Munna is getting himself done, assisting and seeking the call from the umpire. Two on-field umpires, Mr. Jahangir, Mr. Javed and Mr. Sonu. And talking about the TV umpire, we caught Mr. Tariq Saab. So they started off with the slips, a third man, a gully, a straightish point, a cover and a mid-off, a mid-on and a fine leg as well. Here is the first ball. It's Abid who is going to start the very first ball. First ball just played back along the track. And Saklan, this is going to be the knockout stage. Do or die situations. Just winning here and just spotting the fire semi-finalist place. You lose, you go back to the home. बिल्कुल जीतना यहाँ पे जरूरी है। अगर यहाँ से आप नहीं जीतेंगे तो टाटा बाय बाय हो जाएगी इस टूर्नामेंट से, क्योंकि नॉकआउट स्टेज अब शुरू हो गया है। सेकंड क्वार्टर फाइनल मैच है, तो कोई भी गलती आप करना नहीं चाहेंगे इस मुकाबले में। अगर जीतेंगे यहाँ से तो आगे टूर्नामेंट में जाएंगे, लेकिन अगर गलती होगी तो टाटा बाय बाय हो जाएगी इस टूर्नामेंट से। Next ball, just standing tall in the crease and playing it back along the track, not for the runs. And if you look on the upside, we've got his third man slips taken off and is brought onto the short mid-wicket catching position. Once again he goes in. This time off the back foot, patches
Once again, not for the runs. He's having a throw. Oh, there was a proper backing. Had there not been the backing, this ball could have gone for 4. Eventually, once again, there is no run. 4 dot balls on the trot. Jahangir, down the track he goes. He was just take the aerial road, not getting it there. And he's straight away feeling some pressure. Just 5 balls on the trot, dot ones. I believe this is surely going to add some more pressure. और 5 गेंदे डॉट गेंद खेली है जहांगीर मुन्ना ने, इसलिए कोशिश थी कदमों का इस्तेमाल करने की। प्रेशर में होंगे, यहाँ से रैश शॉट करके आप विकेट भी दे सकते हैं, क्योंकि दबाव होता है जब आप डॉट गेंदें खेलते हैं। तो अब जहांगीर मुन्ना पे डिपेंड करता है कि क्या इस गेंद को कैसे फेस करेंगे। पुल किया है और बॉर्डर लाइन से बाहर 4 रन खेलिए और काफी हद तक वो प्रेशर अब जो माउंट हुआ था इन पे वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है इस शॉट से। Well, that's a way to go and a good way to finish the very first over. Just deep in the grease he goes, fractional shot, and he just pulls it and pulls it for 4. Rather, he just smashes it for 4 runs. It's 4 for none. MCC Naidkhai just losing the toss and being asked to bat first. This is a very, very important encounter. Second cover final of the J&K Qualifiers League. And now we will have Riaz. For the first time on the track is going to be Sohail Khan to go with over number 2. सोहेल खान भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं और फील्ड कैसे सेट करेंगे रियाज कोहली के सामने। एक स्लिप, एक थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट और अब स्वीपर कवर लगाया गया है। सोहेल खान गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। 2 ही खिलाड़ी 30 गज के सर्कल के बाहर रहेंगे। सोहेल खान को भी चाहिए अच्छी गेंदबाजी करना है यहाँ से। Absolutely. He is a very, very experienced all-rounder. Did play for KCC Blues as well. And today he has caught himself in a very, very big occasion. He starts the ball. As time stands tall. Oh, just almost hitting the face of that cover fielder. Eventually got his hands in the right time. Let's talk about Riaz. He's a wonderful driver of the ball, especially just standing tall and delivering those punch strokes. Those are always a treat to watch. बिल्कुल रियाज कोहली के की अगर हम बात करें, जो कवर ड्राइव मारते हैं कमाल के मारते हैं और हैंड कोऑर्डिनेशन भी कमाल का होता है। देखिए उठाने की कोशिश हुई थी, लेकिन अभी तक तो गेंदबाजी जो हुई है पूरा जोर लगा रही है फ्रेंड्स पुलवामा की गेंदबाजी। Indeed, they're just bowling on the right spots and they're getting some fair results as well. So far the run rate is just 3 and we believe Friends 11 Pulwama are doing a great job. This time deep in the crease he goes and the ball just being stopped by Sohail Khan, not for the runs. Let's talk about that fielder that has been posted on short mid-wicket, Mr. Javed Malik, I believe. That is giving some kinds of challenges to the batsman to sneak for those singles. बिल्कुल ये अच्छा मूव है। पहले इनको गली में प्लेस किया गया था, लेकिन उसके बाद हटा के इनको शॉर्ट मिड विकेट पे रखा है। ये एक अच्छा मूव है, इससे काफी ज्यादा सिंगल्स रोके जाएंगे और वो जो दबाव आएगा फिर बल्लेबाज पे, क्योंकि जब आप सिंगल्स लेते हैं वो फिर जो दबाव होता है वो हट जाता है। लेकिन जब आप डॉट गेंदे खेलेंगे, यहाँ से मुझे लगता है बाजी जीत रहे हैं गेंदबाजी, अगर हम फ्रेंड्स 11 पुलवामा की बात करें। Indeed, just hitting the right slots, is bowling on to the good length spot. And Riaz just standing tall, he's trying to play those balls but not getting the real connection. As time once again, the ball just keeping low and he's not getting it connected well. Riaz is having the heat of Sohail Khan. That's a wonderful bowling. It's just hitting the right areas. 5 dot balls. Can we have the first maiden over? बिल्कुल, और आप देख सकते हो पैर नहीं चल रहे हैं दोनों बल्लेबाजों की। अगर हम बात करें वो पैर नहीं चल रहे हैं, दूर से खेलने की कोशिश है और सिंगल्स लेना नहीं चाह रहे। आप मिडिल पे लेना चाहेंगे जिनको, ये देखिए आप सिंगल क्या लेंगे जी नहीं। और मेडन ओवर, क्या कमाल की गेंदबाजी सोहेल खान की। Absolutely. He just pulled the first maiden. And that will surely add to the bonus and add to the confidence as well if we talk about Friends 11 Pulwama. Wow, that's a great over. And the pressure starts to build on the batters. MCC Naidkhai just with the run rate of 2. They have gone 4 for none. Very important stage of this very J&K Qualifiers League. It's a knockout stage. And we were just mentioning that playing away from the body
and has been the weakness of Kashmiri batsmen out here. बिल्कुल कोशिश करते कि पहले गेंद से बड़े शॉट के लिए जाए. अगर आप समय बिताएंगे, आप थोड़ा सा स्ट्राइक को रोटेट करेंगे तो फिर बड़े शॉट्स आएंगे. जब आप समय बिताएंगे तो आपको फिर अनुमान होगा कि पिच कैसे खेल रही है. लेकिन आप अभी देख सकते हैं जो शॉट्स लगा रहे हैं, ये अच्छा शॉट खेला है, पीछे प्रोडक्शन मौजूद है, अच्छी फील्डिंग और 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया. तो इसके लिए बारे में सोचना होगा, टैक्टिक्स चेंज करने होंगे एमसीसी नाइडखाई के बल्लेबाजों को. Well, absolutely. You just want to play some mature cricket, knowing that we're not getting runs thick and fast. Only way you just go on with the rotation, and that is what Riaz has to believe in. He isn't off the mark so far. He has played half a dozen of balls. Now it slips in place. Parvez Najjar brought into the slips. In goes Abid. Slower ball, just drives it on the onside. Not very powerfully. There is a protection, and Riaz gets off the mark with a double. This time he will just have some confidence. He will have just some momentum. Talking about Riaz is a very, very important character if we talk about MCC Naidkhai. और शुरुआत अच्छी मिलनी चाहिए और अच्छी पारी खेलनी होगी यहाँ से एमसीसी नाइडखाई ने, इसलिए इनको भेजा है. डी पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद है और 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया. और प्रेशर जो है इनका, आप देख सकते हैं गेंदें कितनी, जो टॉप ऑर्डर जो बल्लेबाज जो उनका एक ही काम होता है, जो करंट रेट को बढ़ाया जाए. 6 ओवर्स में 60, 50, 70 के आसपास रन बनाया जाए. लेकिन अभी जो गेंदबाजी हुई कमाल, और करंट रेट 3.20 की है, जो काफी कम है. Absolutely. Down the track he goes. This time plays the ball beautifully, and again they will just go for a single. Now they have started to go for the rotation, and with every ball the run is scored. We see a change in field going on. On the last ball we got a point, and now that goes to the deep. Finds the fielder at the mid-on, not cornered, not just getting the ball passed through. और अभी जो फील्ड सेट हुई है वो काफी शानदार हुई है. जो अभी फील्ड सेट आप देख रहे हैं, कमाल की है. जो कैप्टेनी रही है अभी तक फैन सलाम पुलवामा की, शानदार. और पता है कि कौन से बल्लेबाज की क्या खामी है. उठाया इस बार मिड-ऑन के ऊपर से, पीछे खिलाड़ी आ रहे हैं, क्या रोक पाएंगे? रोकना नामुमकिन. बॉर्डर लाइन से बाहर 4 रन के लिए गेंद गई है. वेलकम बाउंड्री आती हुई एमसीसी नाइडखाई के बल्लेबाजों के लिए. 3 ओवर इख्तिताम पजीर हो चुके हैं. 13 बगैर किसी नुकसान के एमसीसी नाइडखाई की बल्लेबाजी. That was a great shot from Riaz. He is now chipping into the confidence. The fielder was running after, but he just gave up his chase. That is 13 for none. तेरह बगैर किसी नुकसान के. क्या कुछ गेंदबाजी में चेंज किया जाएगा कि जी नहीं, ऐसा लग रहा है कि सोहेल खानी गेंदबाजी करने के लिए. पहला ओवर मेडे रहा था सोहेल खानी, इस ओवर में भी कोशिश करेंगे अच्छी गेंदबाजी करने की. Absolutely. He is into the confidence, he is into the rhythm, he is into the boost, and he will just love to continue the same. He bowled the first over as a maiden, but some comeback, some runs on the board for MCC Naidkhai, a boundary at the very last over, and they're just gone on to 13 for none. And MLA Jimkhana yesterday batted beautifully in all the departments and just booked to the first, booked to the place in the semi-finals. और विकेट में कोई खराबी नजर नहीं आ रही, ना कोई स्विंग मिल रही है. लेकिन जो टप्पा पड़ रहा है वो स्टैंड एंड डिलीवर डिस्पैच किया मिड विकेट के ऊपर 6 रन के लिए. What a shot that is! That is Jahangir Munna for you, I tell you. What a shot that is! Just watch it in replay. Just the connection was sweet and result was even sweeter. That is a handsome shot from Jahangir Munna. Is looking into the confidence, is in a good nick as well. Was the man of the match if we talk about MCC Naidkhai, I believe the second match, and he's just having a show. बिल्कुल आज इनको अच्छी पारी खेलनी होगी. 12 पे खेले और एक डॉट गेंदें खेली थी उन्होंने, लेकिन अब कोशिश होनी चाहिए वो इंटेंट दिखाने की, क्योंकि इंटेंट कल हमने देखा था, कल के मैच में वो लैग कर रहे थे और दौड़ के 1 रन मुकम्मल किया डी मिड विकेट की तरफ.
वो इंटेंट आपको दिखाना पड़ेगा इस पिच पे। अगर वो इंटेंट आप दिखाएंगे नहीं तो फिर आप एक कदम पीछे रहेंगे, फिर आप जो स्कोर की तलाश में है 180-200 के आसपास, वो आप नहीं पहुंच पाएंगे। Absolutely. Just let's believe in one thing. Openers, knowing that now they have started off to some good runs, but let's talk about the opening stand always. If you just go around 40, 50, 60 for the first wicket partnership, that is always a good boost, always a kind of a strength for your team. And then the rest of the batters feel quite easy to just go and use their long handle, play their natural aggression. I believe that should be the plans as far as Riaz and Jahangir Munna are concerned. Just watching the ball properly, just not giving their wicket easily. And now they have started to go bang. और रन रेट भी है, करंट रेट भी आपको अच्छी रखनी होगी, क्योंकि फिर दबाव नहीं आता है। जो बाकी बल्लेबाज आते हैं खेलने के लिए उन पे फिर दबाव नहीं होता है। लेकिन जब आप ऐसी पारियां खेलेंगे, ज्यादा डॉट गेंदें खेलेंगे, विकेट आप नहीं देंगे, तो फिर जो दबाव रहता है, आप कितनी इमारत खड़ी करेंगे, ये पहले जो ओपनर साझेदारी आपकी होती है उन पे डिपेंड काफी ज्यादा करता है। क्योंकि जब ये नॉकआउट स्टेज हो, एक अच्छी पार्टनरशिप आपको बिल्ड करनी है, स्टार्ट अच्छा मिलना चाहिए। Always partnerships to play a big role. In goes Khan. Chips in air, just shot. My goodness, he just jumped in the air. And not just jumped to the perfection, my goodness. Just by some inches. And eventually the ball just ran to the fence for 4. Just watch it. Flick the ball well. Oh, just some inches over his heads. But a great effort from the mid-wicket fielder. बिल्कुल, अगर थोड़ा सा पीछे होते वहां पे तो मुझे लगता है एक कैच होने का खतरा था वहां पे, लेकिन कोशिश अच्छी हुई थी। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं रियाज कोहली और जहांगीर मुन्ना ने अब वो धीरे धीरे वो इंटेंट दिखा रहे हैं अब यहाँ से। Good consolidation, good running, and a very, very strong opening pair. The run rate has started to grow. It's almost to 7. 25 for none. Slips in place. He would not be happy with the selection of the shot. Munna, Jahangir Munna. He would definitely love to just carry it all the way down to the fine leg. Eventually is very disappointed with the shot. It's gonna be the last ball. Sohail Khan bowling a maiden last now, just going for 12 runs in this over. Down the track he goes, that's up in there. Gully fielder underneath, Mehran. Oh my goodness, the catch has been dropped. Can you believe it? This is very, very sloppy effort out there. Mehran was going for the catch, but ultimately Gully fielder was completely underneath the catch. Can you believe it? Prince 11 Pulwama have lost. And they have dropped Jahangir Munna Saglan. I believe this can be very, very expensive. ये खतरनाक हो सकता है आपके लिए। वहां से मेहरान को जाना ही नहीं था कैच के लिए, क्योंकि पोजीशन बना के रखी थी। जो गले पे जो खिलाड़ी थे उन्होंने पोजीशन बनाया। आप ये रिप्ले में देख सकते हैं, रिप्ले में आप देख सकते हैं। देखिए मेहरान कहां से जा रहा है, मेहरान को जाना ही नहीं है वहां पे, क्योंकि पोजीशन भी बना के रखी। ये नहीं होना था। फ्रेंड्स पुलवामा कोस रही होगी खुद को। जो इन्होंने ये काम किया है ये खतरनाक साबित हो सकता है। वो भी no coordination there. You see, Gully fielder was completely balanced underneath the catch, and Mehran just got from his position to go for the catch, and eventually it's luck favoring Jahangir Munna. बिल्कुल, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। अब जहांगीर मुन्ना को कोशिश होनी चाहिए कि एक अच्छी पारी खेले, क्योंकि मौके आपको बार बार नहीं मिलते। अगर आपको मौके मिलते हैं फिर उसको एक बड़ी पारी में आपको कन्वर्ट करना चाहिए, और वो जहांगीर मुन्ना को यहाँ से करना चाहिए। 4 ओवर टाइम हो चुके हैं, 26 बगैर किसी नुकसान के। क्या कुछ गेंदबाजी में तब्दीली की जाएगी? जी हाँ, ऐसा लग रहा है गेंदबाजी में तब्दीली की जाएगी और बिलाल को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है। क्या बिलाल यहां से एक विकेट दिलाएंगे अपनी टीम को? ये देखने वाली बात होगी। और फील्डिंग की बात करें, 2 ही खिलाड़ी आप 30 के सर्कल के बाहर रख सकते हैं। एक लॉन्ग ऑन पे और एक मिड विकेट पे रखा है। 2 ही खिलाड़ी को आप 30 के सर्कल के बाहर रख सकते हैं, क्योंकि पावर प्ले अभी जारी और सारी है, तो आप 2 ही खिलाड़ी को 30 सर्कल के बाहर रख सकते हैं। ऑफसाइड की जैम पैक्ट फील्डिंग है। एक स्लिप, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक गली, एक पॉइंट, एक कवर, यह है फील्डिंग की जमात। एक मिड ऑफ पे खिलाड़ी को प्लेस किया गया है। अब बिलाल कैसी गेंदबाजी करेंगे इस पिच पे, और जहांगीर मुन्ना और रियाज क्या इंटेंट दिखाएंगे?
जोरदार अपील, उगली उड़ गई हवा में और जाना पड़ेगा पेविलियन क्यों जहांगीर मुन्ना को। Well, a very good and quick comeback from Prince 11 Pulwama. Jahangir Munna demands and a very change of the bowling, just doing the trick. Bilal brought and on the very first ball, and I believe Mehran Pandit just really compensates that drop catch. बिल्कुल, और पूरी प्रिपरेशन के साथ आए हैं। आज आपने जो बॉलिंग चेंजेस देखे, वो जो मिड विकेट शॉर्ट मिड विकेट पे जो खिलाड़ी उन्होंने प्लेस किया, और मुझे लगता है पूरी प्रिपरेशन के साथ है। पता है खामियां क्या है, जहांगीर मुन्ना की खामियां क्या है, रियाज कोहली की खामियां क्या है। मुझे लगता है आज पूरी प्रिपरेशन के साथ आई है फ्रेंड्स 11 पुलवामा की टीम। ये आप देख सकते हैं रिप्ले में, और शानदार कैच वहां पे मेहरा ने पकड़ा, और ये उंगली फिजा में उठ गई। सोनू वहां पे अंपायर के फराइज अंजाम दे रहे हैं, और अच्छा कमबैक होता हुआ फ्रेंड्स 11 पुलवामा का, क्योंकि अभी जो करंट रन रेट है वो 6.24 की है, और वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी गेंदबाजी अभी तक हुई है। पूरे डिसिप्लिन आज हमें नजर आया गेंदबाजी में। और वो जो इंटेंट की कमी आज नजर आई है एमसीसी नादखाई के बल्लेबाजों की, और वो आप कहीं ना कहीं आप पीछे खड़े हैं अभी, क्योंकि जो इंटेंट आपको दिखाना था, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, उतनी मदद है नहीं पिच पे, लेकिन आप रैश शॉट्स खेल के अपनी विकेट दे रहे हैं। और बिलाल ने आती सफलता दिलाई अपनी टीम को। फुरकान एक यंग खिलाड़ी है, काफी अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन आज क्या परफॉर्म करेंगे। शतक भी जड़ा है पिछले मैच में, लेकिन आज परिस्थितियां डिफरेंट है। आज जो सिचुएशन है कोई डिफरेंट है। मिड ऑन की तरफ खेला, कोई भी रन नहीं मिला इस गेंद पे। फुरकान एक उभरता हुआ सितारा है, आज फुरकान को परफॉर्म करना पड़ेगा। फुरकान एक अच्छे खिलाड़ी है। Well, he is a very young character. This time, loud appeal for LPW. No. Will they go for the review now? That was a very close shot for an LPW. Just across the line, he was sweeping it and not getting it right. Next ball has been played beautifully. That has gone the distance. That is a shot from Furqan, and his intentions are looking quite great and clear. He is not going to play slow, and is going to show his aggression. The ball just kept sailing, and beautifully it goes over mid-wicket for a massive 6. और फुरकान की बात करें तो अच्छी फॉर्म में, शतक भी जड़ा था पिछले मैच में, यहाँ पे नहीं, लेकिन ग्राउंड दूसरा था, लेकिन उसी फॉर्म को कैरी करना चाहेंगे। यही इंटेंट आपको दिखाना है यहाँ पे। And if you are going through the nick, if you are going through form, if you are going through prime, definitely just watch it in replay. Beautifully picked up and beautifully gone for 6 rather. .32 for 1. The run rate approximately 7. But that wicket of Jahangir Munna must be hurting the likes of MCC Naidkhai, because he was dropped and he could not take full advantage of that survival. बिल्कुल, उनको फिर बड़ी पारी खेली थी, लेकिन आज कुछ कर नहीं पाए जहांगीर मुन्ना, और वो इंटेंट की कमी आज नजर आई है एमसीसी नादखाई की जो बल्लेबाजी है, वो इंटेंट की कमी नजर आई है, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, आपने रीड भी किया है, काफी मैचेस इस पे हुए हैं। आपको इंटेंट दिखाना था जो भी फुरकान ने दिखाया है। And the match is just halted for a while, I believe. It's actually umpire's call. They're just checking whether it's a boundary or a 6. They're just checking it out. There we go. It's being checked whether the ball just... And this is going to be checked over there. I believe it is a 6. There it go, just landed away from the ropes. Yes, it's gonna be 6. And it's being changed, it's only a 4, maybe. It's not a 6, it's a boundary. And overall, a good check over there. Let's just give appreciation to the umpire, just have a check on the fall of the ball. क्योंकि पता है T20 फॉरवर्ड में एक रन काफी ज्यादा क्रूशियल होती है, इसलिए चेक किया गया वहां पे। थोड़ा बहुत समय भी लिया, बड़ी जरूरी है, क्योंकि क्रूशियल रन्स कभी कभार 2 रन बाद में पड़ जाते हैं, वो क्रूशियल होते हैं वो 2 रन। MCC Naidkhai and Friends 11 Pulwama. Wraps him on the pad.
That's end of over. 5 done. It's 30 for the loss of 1. You are stronger than you think. It's going to be the last over of power play. Saklan just talk about the power play. In the recent matches, we did see more than... Oh, just short and just wide of that slips. And the ball just ran away. I believe, has it crossed or not, will be checked firmly. As here comes the signal from the umpire, it's a boundary. I was telling you, Saklan, if we talk about the power play in the recent matches, around 60-70 runs was scored. But today, let's give credit to Friends 11 Pulwama. They surely have controlled the flow of the runs in MCC Naidkhai, just having 34 on the board. बिल्कुल पूरी प्रिपरेशन के साथ आया. रन ज्यादा दिए नहीं क्योंकि जो गेंदबाजी रही है वो ऑन द ट्रॉट शानदार गेंदबाजी रही है अभी फ्रेंड्स 11 पुलवामा की. और जोरदार अपील हुई है. क्या थर्ड अंपायर की मदद ली जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल ली जाएगी. That was a great piece of stumping by Mehran Pandit. He's damn sure that he just is out of the crease, I believe. Maybe the foot was in the air, and that's going to be a very, very great decision. Let's see here. Oh, that is very close. That is very, very close call for the TV umpire Tariq Saab. There was the ball. He was deceived completely. He was trying to drive it. And I believe the foot is inside the crease, but that's going to be checked closely. Oh, Mehran Pandit very quickly just whipped the bills off. And let's wait for the decision what comes out for the TV umpire. बिल्कुल यहाँ से इंतजार किया जा रहा है, बट यहाँ से ऐसा लग रहा है, इस एंगल से लग रहा है कि सुरक्षित थे वहाँ पे, लेकिन फिर भी चेक किया जाएगा क्योंकि ये विकेट काफी क्रूशियल होने वाला है. यहाँ पर रिप्ले में देख सकते हैं. और डिसीजन इज स्टिल पेंडिंग. रॉक एंड रोल ये चेक किया जा रहा है. ये चेक हो रहा है और डिसीजन अभी भी पेंडिंग है. It's a clear my gut feeling, I believe. Yes, here comes the decision. It's not out. I was going to say the same thing. When the bails were whipped off, the foot was landed in the crease. बिल्कुल. That is what saved the batsman Furqan over there. बिल्कुल. And there comes the decision as well. It's not out. And overall, a very, very good contest going on. Just fighting it out and knowing the importance of this match. It's a quarter-final. You win, you go to the semis. You lose, you go back to your home. बिल्कुल, यहाँ से जीतना बहुत जरूरी है. जीतेंगे तो सेमीफाइनल्स में जगह बनाएंगे, हारेंगे तो आपकी टाटा बाय बाय हो जाएगी इस टूर्नामेंट से. इसलिए जान लगा रहे हैं दोनों टीमें, लेकिन आज जो इंटेंट की कमी नजर आई एमसीसी खारगिल के बल्लेबाजों की, क्योंकि ये देखिए आप, शानदार शॉट, स्टैंडर्ड और गोली की मानद बॉर्डर लाइन से बाहर 4 रन के लिए. Just experiment to go up there and just giving the flight to the ball and all Riaz too, just smashing it through extra coverage and no chance, and the ball races away for 4 runs. Second boundary. 8 runs so far. That was a glorious shot. No fielder moved. And when Riaz hits, he hits it in the very, very great direction. बिल्कुल पावर जनरेट करते हैं अपने शॉट्स में. 8 रन अभी तक काशिफ खर्चे इस ओवर में. और इस बार खेला है पॉइंट की तरफ. क्या रन लेंगे? जी नहीं, रन नहीं लेना चाहेंगे और तोहफे में अपनी विकेट ना देंगे, क्योंकि ऑलरेडी 1 विकेट गवा चुका है और जो करंट रन रेट है वो 6.70 के आसपास है. वो करंट रेट में मुझे लगता है थोड़ी सी कमी है, बट इसको कोशिश होगी इनकी इसको बढ़ाया जाए. ये शॉट क्या कमाल का खेला है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए. That was a great shot, just using once again that flight, and on the side it was also ball onto the patch. Just watch it, and all he need to do, just it was a kind of a sweep shot, and he just hits it for 4 runs. Third boundary of the over. The run rate now just passes and crosses 7. That is when you have a good batsman over there looking in good touch. You just need not to worry at all. MCC Naidkhai
will be pretty pleased with the way things are going for them. बिल्कुल अब निगाह जमा ली है बल्लेबाज ने, कोशिश होगी, क्या वो एलिवेशन मिला? नो माय गॉड, फिर से कैच ड्रॉप, और वही खिलाड़ी है जिन्होंने कैच ड्रॉप किया था. Oh, can you believe it? The catch has been dropped at the point region. It was as easy as it was looking. And if you drop these sitters, you are surely going to make some problems for your side. He can't believe that he has dropped the catch. In the replay you can have. What's going on with the fielders of Prince 11 Pulwama? Watch this. He was trying to hit it over extra coverage and ball just taking the edge. And oh, that is very, very sloppy. That is not a great effort from that point fielder. He will be cursing himself badly. बिल्कुल, ये आप रिप्ले में देख सकते हैं. आसान सा कैच था, ज्यादा मुश्किल था नहीं. ये आपने क्या कर दिया. आज कैचिंग सही नहीं रही है. गेंदबाजी तो अच्छी रही है, लेकिन जो कैचिंग है वो फ्रेंड्स इलेवन पुलवामा की आज सही नहीं लगी हमें. And 6th over done, power play done, 13 of the over. MCC Naidkhai 43 for 1. Bilal. He's gonna continue. Two spinners sprawling from both the sides. Just driving it beautifully. And only for a single. So we would love to get the fielders outside the circle now. We got a deep point. We got a long off. A long on, a mid wicket. Oh, Pawlam! What a ball that is! Completely deceived Furkan over there, and that has done. This is what we were thinking for. No proper catching, but the bowling has been great, and this is what we see. Furkan departs, and that actually was a ball that just came in sharply, spun in sharply, and Furkan deceived and is knocked over. क्या गेंदबाजी हो रही है, और बिलाल 5 रन खर्चे और 2 विकेट्स ले चुके हैं. और क्या गेंदबाजी हो रही है, ये रिप्ले में आप देख सकते हैं. अगर हम बात करें इस गेंद की, लंबा डिविएशन हासिल हुआ, या फुरकान देख सकते हैं. नहीं, पैर वहां पे चले नहीं. आप देख सकते हैं दूर से खेलने की कोशिश हुई थी. That's the reason, the trigger moment. I always keep on saying the trigger moment on the batsman has to be quite great. You just try to play away from the pitch of the ball. And if you're not reaching to the pitch, you definitely can have the other side. और बिल्कुल वो जो बल्ला था वो मिड विकेट की तरफ घुमा था. कोशिश थी इनकी ये एक क्रॉस बैटेड शॉट खेला जाए. अगर स्ट्रेट बैट से खेलते मुझे लगता है बच सकते थे वहां पे. और रिप्ले में भी आप देख सकते हैं पैर नहीं चले, पैर पीछे खड़े ही थे, आगे गए ही नहीं पिच की तरफ. और ये तो फिर होना ही था. और एक और विकेट का पतन होता हुआ. एमसीसी नाइदखाई की टीम परेशानी में है. इस परेशानी से उनको कौन निकालेगा. अब समीर खेलने के लिए आए हैं. 44-2. Just cuts the ball on the very first one and he just gets off the mark. And MCC Naidkhai once again feel the urgence of a partnership cyclone. They were going great. Riaz still over there as an opener. Lot will depend on him. Lot will depend on Riaz. This time he just plays down to Shirazwani at the covers, not for the runs. And definitely it's a good contest going on. Both the sides just fighting it out, using all the bravery, all their intelligence, all their mind, all their plans, all their execution. And so far, I believe Friends 11 Pulwama are just going on the top of the game. बिल्कुल, अभी पूरी तरीके से पिच को भी रीड किया है. और जो प्रिपरेशन रही है, क्योंकि काफी ज्यादा मैचेस देखे होंगे इस मैदान की बात करें तो बिल्कुल आज जो गेंदबाजी रही है ऑन द ट्रॉट, शानदार गेंदबाजी रही है. इस बार कलाइम का इस्तेमाल किया है. बड़ी गैप है वहां पे, क्या चौका हासिल करेंगे? जी बिल्कुल चौका हासिल करेंगे. बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए. और जो डीप मिड विकेट का खिलाड़ी है वो मुझे लगता है स्क्वायर लेग या बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे होना चाहिए. ये आप बाद में जो ओवर, इसके बाद जो ओवर आएगा क्या कुछ चेंज किया जाएगा. मुझे लगता है वहां पे खिलाड़ी होना चाहिए. 50 up on the board. It's 2 down. 7 overs gone.
और आते ही शिराजवानी ने वो काम कर दिया और कैच आउट हो गए और वो भी रियाज कोहली। जाना पड़ेगा पेविलियन को, फ्लाइट से बीट कराने की कोशिश, लालच दी थी वहां पे शिराजवानी ने। एक और विकेट का पतन होता हुआ एमसीसी नादखाई की टीम और परेशानी में मुब्तला है। Well, I was telling you the spinners are getting a lot of support from this very pitch. And this is why we are seeing Friends 11 Pulwama are just very happy at the moment, just getting 3 quick wickets. Shirazwani flats the ball and that was brilliantly taken in the deep. This time no problems and no mistakes with the catcher. Sahil Khan, a very important catcher. And Shirazwani just started to go leading from the front. And we are seeing spinners destroying and showing the dominance out here on the top of the game. बिल्कुल आपको अगर इस शॉट की बात करें, पिच तक पहुंचना पड़ेगा, आप दूर से नहीं खेल सकते। अगर आप पिच तक पहुंचते वो एलिवेशन मिल जाता और डायमेंशंस भी छोटे हैं नहीं, यहाँ पे डायमेंशंस भी बड़े हैं। और अब आए शहनवाज, क्या शहनवाज कुछ करेंगे यहाँ से? अब यहाँ से एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी क्योंकि करंट रेट भी 6-7 के आसपास है। 50 3 विकेट के नुकसान पे अभी 8वां ओवर इस पारी का चल रहा है। Well, having 2 fresh batsmen now, it's called a rebuilding. And Shahnawaz Bashir, captain, will be against the captain. In goes Vani. Just wide of Vani. And Captain Shiraz, beg your pardon, Shahnawaz Bashir gets off the mark. Definitely now we feel a sense of a rebuilding between these two batters. Solid defense. He just plays the ball back along the track, not for the runs. And Saklan, another quarter-finals that are to be played out here. Second of the day today. This one plays the ball in the gaps. And the ball just races away to the fence for 4. Let's talk about, still we have got 2 quarter-finals. We have got T-Star and SSM Cricket Club playing the second quarter-final of the day. Tomorrow we have got, FCC Chanapura and we have got one more team, that is Pathan Pirates Cricket Club. They will be watching this game pretty easy and pretty closely as well, knowing that the spinners are getting some assistance from the ground, and with this they will be definitely bringing more spinners in the team, knowing that fast bowlers are not getting any assistance, and that's why they will believe in having more spinners in the very playing 11. बिल्कुल, स्पिनर्स को आप एक ऐड करना चाहेंगे, अगर आपके पास 1-2 स्पिनर्स है, एक और को आप ऐड करना चाहेंगे क्योंकि इस पिच में ज्यादा मदद स्पिनर्स को मिलेगी क्योंकि वो फ्लाइट से बीट कराते हैं और डिविएशंस भी हासिल करते हैं क्योंकि डायमेंशंस बड़े हैं, तो वहां से कैच आउट होने का ज्यादा खतरा होता है। और कोशिश होनी चाहिए, जो अभी देख रहे होंगे इस मुकाबले को काफी ज्यादा कीनली से देख रहे होंगे, बाकी जो अभी इसके बाद जो जिनका मैच है बैकफुट पे आया, खेला है, सुपर कवर की तरफ 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया। तो 8 ओवर इख्तिताम पजीर हो चुके हैं, 63 विकेट के नुकसान पे एमसीसी नादखाई। Back we are. First ball just plays it down to the point and they go through for a single. And you're seeing spinners introduced from both the sides, and they're getting some good help, and they got the breakthroughs as well. Good ball, that one, a bit quicker. Shahnawaz was just trying to guide it, and he was not getting it there. Once again, just coming behind the line and just pushing it straight to the mid-off. 2 dot balls on the trot. This one, just pushing it. Eventually, MCC Naidkhai will be hoping just try and reach 100 runs without losing any more wicket. And if they just finish at 100 for 3, I believe that will be a very good comeback for them. बिल्कुल पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश हो रही है, बट पार्टनरशिप बिल्ड हो ही नहीं रही है।
वो जो स्ट्रेटजी आपको दिखानी है पार्टनरशिप बिल्ड कीजिए, जब खराब गेंद मिलेगी उसको सही नहीं सही, लेकिन जब आप ज्यादा डॉट गेंदें खेलेंगे, जब आपकी टीम परेशानी में, तो फिर जो खराब गेंद होती है उस पर भी आप बड़े शॉट नहीं मार सकते। ऐसा होता है क्योंकि ऐसे दबाव में आती है बल्लेबाजी, वही अभी हमें नजर आ रहा है। और तेजी के साथ अच्छे प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए एक रन दौड़ के मुकम्मल किया। क्या दूसरे की मांग रहेगी जी? नहीं, There was a big confusion between the batters over there, and it will be very important, amazing if we can have the replay of that second run if they were walking for, if we can have the replay of that second run they were just looking for, that was very, very entertaining and funny over there. I was looking at Shahnawaz Bashir, he was just, he would just come go, and eventually just decided not to go for the run. Here we have the replay. There you see, first run, wicket keeper Mehran just English. See, oh my goodness, that was very, very great visuals. And it's 63 for 3. Let's see whether over number 9 is completed. Yes, I believe 9 done. It's 63 for 3. And we would love to get the playing 11 of both the teams on the screens, please. Shirazwani into the second over of his quarter. Caught a wicket in his first one. This time just leans forward and just plays it down to the point region, not for the runs. Still flighting the ball, and it's just tempting the batsman. This is called tempting the batsman. Just come down the track and just hit him. And so far is pretty patient. Next ball, pulls the ball, and has gone a massive shot, and has gone over the mid wicket. Chest deep in the crease he goes, and he just lofts the ball for a 6. और यहां से शिराजवानी ने गलती की, 2 गेंदे ये आप फ्लैट दे रहे, ये देखिए छोटी गेंद की थी शिराजवानी ने, कोशिश थी हमें ट्रैप में फंसाने की, लेकिन जो लाइन थी वो काफी गलत थी शिराजवानी की, और डिस्पैच किया समीर ने 6 रन के लिए इस गेंद को. Absolutely, it just changed the length of the ball on the third. Had he gone that with the flight, maybe the results could have been something different, but it was beautifully hit by Samir. As time smashes the ball, there is a protection in the deep mid wicket region. It's gonna be a single, 70 now, and Samir, I believe, is using the long handle, and Shahnawaz Bashir, the captain, is just believing in 1s and 2s only. इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, ट्रैप में फंस गए. जी हाँ, फंसा लिया है. यहाँ पे एक्सपीरियंस है शिराजवानी की, और उसी का इस्तेमाल किया, और दूसरा का शानदार सोहेल खान ने पकड़ा है. I was telling you, Sohail Khan is a great athlete, and the flight did the job for Shirazwani. Temptation doing the job, just flighting the ball, asking the batsman to come down the track and lift him, and he could not get the distance, and a very, very beautiful catch by Sohail Khan. It's 4 down, 70 for 4 now. Captain Shahnawaz Bashir departs 2 of 5, and Friends 11 Pulwama on the top of the game. और क्या यहाँ से स्नो ड्रॉप ड्रिंक्स ब्रेक ली जाएगी? जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि स्नो ड्रॉप ड्रिंक्स ब्रेक मैदान पे है. 74 विकेट के नुकसान पे एमसीसी नादखाई की टीम को दावत दी. Stronger than you think. TCI Max Cement. ज्वेलरी तो सब खरीद लेते हैं, लेकिन खास ज्वेलरी खास लोग ही पसंद करते हैं. कारीगरी ऐसी जो मन को छू ले, और खिदमत ऐसी जो दिल को छू ले. तो हमें खिदमत करने का मौका दे और तशरीफ लाएं असावीर ज्वेलर्स, कश्मीर का अपना ब्रांड, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, श्रीनगर.
You are just watching the replay of the wickets. And that catch was dropped over there. And that was really a very sloppy effort by wicketkeeper Mehran Pandit. This was the catch. Another drop catch. Oh! Catching so far. It wasn't great. Ultimately, Sohail Khan just getting that beauty of a catch. Here we go. Ah, that was a beautiful ball. Just not making sure reaching the pitch of the ball, and it was bowled him. Shirazwani. Here we are back with the action. Half the over is done. 10 done. 4 down. It's 71. MCC Naidkhai losing the toss and batting first. And we will have some replays of the catches out here. See, down the track he goes. And that was beautifully held by Sohail Khan, one of the great fielders of Pulwama. It was indeed a great catch. And next it was Captain Shahnawaz Bashir. There we go. Beautifully held by that fielder. Good catching. And Shirazwani just leading from the front. It's Kashif Kamar into the very second over of his quota. And Saklan once again. Spinners doing the job for Prince 11 Pulwama. बिल्कुल पता है कि स्पिनर्स इस विकेट पे अच्छी गेंदबाजी करते हैं और काशिफ गेंदबाजी करने के लिए आएंगे और अगर किसी और नॉन रेगुलर गेंदबाज को आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो स्पिन जानता हो. बस यहाँ से शिराजवानी ने अच्छी गेंदबाजी की और काशिफ उसी नक्शे कदम पे चलते हुए नजर आ रहे हैं. एक और गेंद और जोरदार अपील हुई है और नकारा वहां पे अंपायर ने. अच्छी गेंदबाजी काशिफ कर रहे हैं और स्पिनर्स का दबदबा है इस पिच पे. Well, they go for the review. Have they got a review? I believe there is a review for the stumping once again. Got a review for the stumping once again. Here we go. If you are having the visuals on your screens for that stumping. And I believe he was in the crease. Still waiting for the decision. Once again, just watching it from another different angle. And with some slow motions as well. Maybe they're just appealing for that cut behind. Decision pending. And everything is gone from here. Nothing on the screen. Decision is still pending. And now it's gonna be with some zooming in. Oh. If it is for stumping, I'm sure that his foot was inside. And the decision seems pending. Let's see what comes out the decision from TV umpire. Once again, just watching it, giving it one more side. Just one more try. He is just rolling it. He is just rolling it. Oh. With just another angle. Oh. That can help them just go proper. And review system just being utilized, trying to get the better view.
I believe there was no edge. And if they are talking about stumping, his foot was inside the crease as well. But wait for the TV umpire's decision. I believe it is not out. And let's see, still the decision is come out. But we can see on the field, the players are getting back to their spots. It was eventually a wonderful ball, a very, very great line is bowling if we talk about Kashif Kamar. बिल्कुल अच्छी गेंद थी और दोनों चेक किए गए. पहले जमाने में नहीं होते, पहले होता था कि अगर आपने स्टंपिंग के लिए अपील किया तो स्टंपिंग चेक किया जाता था, लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल किया गया. पहले एज क्या एज था वहां पे, उसके बाद स्टंपिंग का भी देखा गया. तो एक अच्छा है, ये एक अच्छे एंगल से देखा गया इस डिसीजन को और फिर नॉट आउट का डिसीजन आया. Next ball just cut beautifully, just cuts it late and cuts it for 4. Some relief to MCC Naidkhai for having that boundary. And they just move on to 75 for 4. And once again they feel the need of the partnership's acclaim, because middle order is exposed pretty quickly. Just 11th over in progress. Once again just cutting it and straight to the point region, not for the runs this time. And the run rate is just over 7. Their job will be just to not let the run rate go down 7 this time. Oh, straight to Shirazwani. Oh, what a beautiful catch has been taken by Shirazwani. Just has to go down, and eventually Shabir departs and Kashif gets his first wicket. It's half the team back to the pavilion now. 75 for 5. तारीफें करनी होगी कैप्टन की. आप देखिए पोजीशन, ये देखिए फील्ड पोजीशन देखिए कहां पे सेट की थी. मुझे लगता है आज पूरी तरीके से एक तो पिच को भी रीड किया है, प्रिपरेशन के साथ आए हैं, पता है किस खिलाड़ी की क्या ये जो गलती रहती है, खामी रहती है, खामी कह सकते हैं हम. आज मुझे लगता है ये जो फ्रेंड्स पुलवामा ने जो प्रिपरेशन करके आए, आज फुली प्रिपेयर करके आए थे. Indeed, they are absolutely full prepared today for this quarter final. And just watch it. Half the team back to the pavilion. It's just 75 on the board. Watch that beautiful catch. या आप रिप्ले में देख सकते, वरना वहां पे फील्डर प्लेस नहीं होता है. 11वें ओवर में वहां पे कोई फील्डर होता ही नहीं है. And secondly, let's talk about, he's the short mid-wicket fielder. I always keep on saying and mentioning short mid-wicket fielder, especially if you have got spinners on. बिल्कुल. It's always a very, very wonderful position for the fielder, and that is creating challenges for the batsman. और शिराजवानी वहां पे खुद उन्होंने वहां पे खुद को प्लेस किया था. ये आप देख सकते हैं आबिद मकरू नॉट आउट सिफर पे. इसके बाद टेल शुरू हो जाएगी. And but let's talk about Ayaz Maqbool, all-rounder from Pulwama. He will add some strength to the likes of MCC Naidkhai. He is still out there in the dugout. And Abid Makru, I believe he is the owner of Makru Valley Sports. And he's going with the same bat, that's MVS, Makru Valley Sports. अच्छा MVS का बल्ला चलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी. और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेला, कोई भी रन नहीं मिलेगा. आज परफॉर्म करना पड़ेगा आबिद मकरू को, क्योंकि अभी टीम परेशानी में है. It's 11 done, 75 for 5. Stronger than you think. Shirazwani back into the attack. 2 overs, 2 wickets, 18. That is up in there. This has gone the distance, I believe. Yes, this is a massive shot from Samir. He is not going to lose his cool. And he's going to go bang. First ball, and he welcomes him with a massive shot. That is a monstrous blow of Saklan. That is monstrous. ये आप देख सकते हैं शानदार स्लॉग स्वीप और बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए डिस्पैच किया है इस गेंद को.
और यही इंटेंट दिखाना होगा और शिराज भाई ने Oh my goodness! Oh my God! Look at That has broken the window, back window of the Tata Sumo. That is pretty dangerous, and that is, and I feel short of a driver. Oh, I believe this is the Tata Sumo in which the team of MCC Naidkhai comes. Oh. That is very sad. If we look from the point of view MCC Naidkhai, just look at the screens and the back view mirror, and here comes the driver. He's just unlocking it. Oh, it's ball inside. Oh, the ball is inside. अभी भी ढूंढा जा रहा है गेंद को वहां पे. Ah, that is so serious, and our cameraman is out there. There we go. And this is very sad for MCC Naidkhai. Very sad for MCC Naidkhai. And it was screens, Tata Sumo. And the back window, it's been broken with that shot. Oh, and here goes the ball. And had MCC Naidkhai been in a very great position, they would have not, they would have not minded it at all. और ज्यादा चुभेगा उनको भी जो ये शीशा वहां पे टूटा है, अभी ज्यादा टूटेगा. अभी जो यहाँ से अगर अच्छी पोजीशन में होते तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी बहुत बिल्कुल जो शॉट लगाया है समीर ने, वो आप देख सकते हैं, वो पूरी तरीके से टूटा है. रिपेयर करवाना पड़ेगा इसको. And I believe it will become talk of the town. बिल्कुल. It's gonna be the talk of the town. And you see, and just watch the shot beautifully. That was beautifully slogged. The typical Dil Karatne Dilshan shot, and just bang on the back window of Tata Sumo. And we're back with the action. Just waits for the ball and plays it for a single. 82 for 5. MCC Naidkhai just being asked to bat, losing the toss. और कल भी एक शीशा टूटा था जो तजमुल बाबा ने वो काम किया था, लेकिन आज इस बार समीर ने वो काम किया है. तो अभी अगर हम शीशों की बात करें तो टूट रहे हैं. Well, that is not great news at all. Yesterday one mirror of residential house broken. Today, another mirror. If a glass, if we talk about Tata Sumo being broken, it's everywhere. Nuksan after nuksan. बिल्कुल नुकसान पे नुकसान हो रहा है. अब इसकी भरपाई करेगा तो करेगा कौन? And it can be done only if MCC Naidkhai just go on to win this match. I believe they will not just take it on the heart, but if they lose, it will be very heavy for them. Next ball, he just smashes it, and Abid just gives a field another run to the team. It's 84 for 5. 9 runs so far, and Shirazwani 2 for 27. Just short, and it just fall short of that backward point. When he completes his over, 9 of the over, 12 done. It's 84 for 5. TCI Max Cement. ज्वेलरी तो सब खरीद लेते हैं, लेकिन खास ज्वेलरी खास लोग ही पसंद करते हैं. कारीगरी ऐसी जो मन को छू ले और खिदमत ऐसी जो दिल को छू ले. तो हमें खिदमत करने का मौका दे और तशरीफ लाएं असावीर ज्वेलर्स, कश्मीर का अपना ब्रांड, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, श्रीनगर. और पहले गेंद खेला है पॉइंट की तरफ, रन की मांग और रन भी मुकम्मल किया है. क्या दूसरे की मांग रह गई? जी नहीं, एक ही रन मिलेगा वहां पे. और बिलाल गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, आखिरी ओवर कर रहे हैं और 15 रन अभी तक दे चुके. 2 विकेट्स उन्होंने प्राप्त किए हैं. Good bowling, very economical. Just driving the ball in the gaps and just going for those runs. That is a good strategy. Knowing that half the team is back to the pavilion and they cannot afford to just go for the dot balls. Eventually, somehow, just keep the scoreboard ticking. Next ball, just plays it down to the point. Another single, 3 singles on the 3 balls.
And friends 11 Pulwama Saklan, they will be very happy with the way things have gone for them. बिल्कुल आज गेंदबाजी भी अच्छी रही, लेकिन जो फील्डिंग कैचिंग आज उतनी अच्छी रही नहीं, लेकिन जो गेंदबाजी जो चेंज किए गए और आउट होने का खतरा, सॉफ्ट डिस्मिसल कहूंगा मैं यहाँ पे, कोई भी जरूरत नहीं थी, पैर नहीं चले, कदमों का इस्तेमाल, वो एलिवेशन मिला नहीं, एक और विकेट का पतन होता हुआ एमसीसी नाइडखाई की टीम, ये क्या हो रहा है? This is great bowling indeed. Just down the track he goes. He was trying to just play it over Shirazwani's head and not keeping the ball in the very same direction. And just watched this beautifully just held on. And once again flighted better off the batsman. Abid departs for 2 of 5. It's 87 for 6 now. और आबिद मकरू जा रहे हैं, आज एमवीएस का बल्ला कुछ नहीं कर पाया। अब अयाज मकबूल को भी भेजा नहीं है, क्या अयाज मकबूल को बचा के रखेंगे? मुझे लगता है वो अगर इनको भेजा गया होता तो वो कुछ काम करते। Well, that's execution, that is strategy, that's team's plan. Ayaz Maqbool still not coming out to the center. He can produce some handy runs down the order. And let's talk about Bilal's bowling. He's into the last over of his quota. 3 wickets and only 17 runs. He completely changed the real scenario of the game. बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और अभी तक जो सेकंड क्वार्टर फाइनल रहा है बिल्कुल फीका फीका सा नजर आ रहा है। अभी जो बल्लेबाजी रही है वैसे आज क्लिक नहीं कर पाई है एमसीसी नाइडखाई के। Well, MCC Naidkhai, so far they have been so great in this tournament, and just today losing the confidence, losing that rhythm, and they find themselves in a very, very struggling situation. Firdaus is the new man who walks out to the center. And can Bilal just finish with 4 wickets? He's got 2 balls to go. In goes Bilal. A bit quicker, appealing for that LPW. And that was a bit quicker eventually, not going for the review. They've already lost the review. And talking about the toss, Captain Shirazwani won and straight away he got to bowl first. So far going great for them. Just forward. And there is no runs. He completes his quota. 4 overs, 3 wickets for 17. 13 done. It's 87 for 6. Royal Concepts Mixi Royal Concept, Bacha Chowk, Lal Chowk, Srinagar. Kashif Kamar. Spinners just attacking from both the sides. Bilal just completed his quota. 4 overs, no maiden, 17 runs, 1 wicket. His economic just over 4. That is great if we talk about the T20 format. Down on the onside again for a single. It's a clean. Singles not gonna hurt friends 11 Pulwama, except we see some big sixes and boundaries. सिंगल से काम चलेगा नहीं, वो इंटेंट दिखाना होगा और 1 2 3 वो उसको टारगेट करना होगा। वो जो मोमेंटम वापस आप पे आएगा और करंट रेट भी फिर 8 के आसपास पहुंच जाएगी। लेकिन अभी तक वो जो इंटेंट है उसकी कमी नजर आई, वो इंटेंट दिखाया नहीं है एमसीसी नाइडखाई के बल्लेबाजों ने। And the target will be just try and reach 150. If they manage to reach 150, I believe that's going to be some total on the board. And if the spinners also chip in with some wickets, having Ayaz Maqbool in the side, I believe this ball just batted beautifully. There is a protection at the deep scale region. A single is going to cruise. And Ayaz Maqbool's quota 4 overs, his spell will be very crucial. बिल्कुल वो जो गेंदबाजी करते हैं, शानदार गेंदबाजी करते हैं और स्विंग भी प्राप्त करते हैं और स्विंग भी उनको मिलती है, लेकिन इस विकेट पे वो स्विंग है नहीं। यहाँ से आपको क्या करना है, लाइन आपकी सही होनी चाहिए। अगर आप लाइन से थोड़े से भी इस बार शानदार शॉट किया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, पीछे खिलाड़ी आ रहे, क्या रोक पाएंगे? थोड़ा सा आउटफील्ड वहां से स्लो है और दूसरा रन भी मुकम्मल किया। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों की।
समीर और फिरदौस को कुछ सहारा देना होगा, यहाँ से वो इंटेंट दिखाना होगा और 150 तक अपनी टीम को पहुंचाना होगा. And Samir has to play a role indeed. He has been there for 22 balls. He has scored 36. He has caught his eyes in. He just knows the behavior of the pitch. Next one, guided beautifully. The ball is running away. Down to the third man region, I believe. The ball is enough in it, and it goes over the line for 4 runs. Typical Samir's late shot, and he just goes on to the 40. It's Sporting done, 97 for 6. Seeing in the replay, that was played beautifully, and Javed Malik just giving up the chase. Shiraz Wani once again, he will be in the final over of his quota with an economy of 7. He conceded 27, but all importantly, he got 2 wickets. He would love to finish with 1 more wicket in his bag. कोशिश होनी चाहिए, अगर 1-2 विकेट्स लेंगे यहाँ से तो अच्छा रहेगा. बैकफुट पे आए, खेला है स्वीपर का और की तरफ पीछे खिलाड़ी आ रहे हैं. 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया. और शिराज वानी ने भी अभी अगर इनकी गेंदबाजी की बात करें, अच्छी गेंदबाजी की है. 2 विकेट्स लिए इन्होंने. Absolutely, he has got 2 important wickets, and he just believes in only the spinner at this time. That is in the gaps. This is beautifully, and the ball has gone played down to the deep point region for 4 runs. This was width offered to the batsman, and once again we find Samir hitting that boundary. He's just gone on to 44, and he will be the man. MCC Naidkhai will love to just continue till the end of the innings. बिल्कुल कोशिश होनी चाहिए. 20 ओवर्स तक खेले. अगर ये समीर 20 ओवर्स तक खेलेगा तो 150 तक पहुंच सकती है टीम, लेकिन समीर को वो यहाँ से वैसी पारी खेलनी होगी. बैकफुट पे आए, फील्डिंग वहां पे, और पीछे खिलाड़ी आ रहे हैं. क्या रोक पाएंगे? थोड़ी सी आउटफील्ड वहां से स्लो है, और दूसरा रन भी मुकम्मल किया है. This is turning out to be good over. 7 of the 3 balls are ready, and Samir just going closer to his half century, just 4 short. 46 is not out on. He is the man, just going great at the moment, just guiding the ball once again down to the gully. Not for the runs. It turns out to be a dot ball. Let's see if Samir just hits the boundary and just gets to his half century. And just over Javed Malik. This time the ball is running away. I believe the ball will just stop inside the boundary. Yes, it did. But enough time for Samir to just come back for the second. 48 runs he goes on to, and he feels very tired. That will be a kind of a physical test as well. His fitness will be tested because he has gone with running a lot. बिल्कुल एमसीसी नाइडखाई का जो खेमा है वो भी चाहेगा कि ये 20 ओवर तक खेले. अच्छी गेंद, कोई भी रन नहीं मिला इस गेंद पे, और वो इंटेंट दिखाया है समीर ने. तो 15 ओवर इख्तिताम पजीर हो चुके हैं. एमसीसी नाइडखाई 106 विकेट के नुकसान पे. And just trying to just play all those remaining 5 overs as well. कोशिश होनी चाहिए पूरी गेंद खेले. इस बार लॉफ्ट किया है गेंद को,
क्या वो एलिवेशन मिला, फील्डर जा रहे हैं, और अच्छी फील्डिंग वहां पे, और तेजी के साथ दूसरा रन भी मुकम्मल किया। ऐसा लग रहा है कि 2 रन सेव किए अपनी टीम के लिए, और वो एलिवेशन मिला नहीं। कोशिश है, अब फिर कोशिश कर रहे हैं बड़े शॉट्स के लिए, वो इंटेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और फील्डिंग की दाद देनी पड़ेगी वहां पे। Big boundary, not just going the distance, but eventually a great stop from that. This one, oh, just one hand to the ball, eventually not helping the ball stop, and it goes over the square leg region for 4 runs. As the slog over started, they started to go bang. 6 runs of the first 2 balls. And the score, just watch it, it's crossing 1-1-2. और डगआउट से जो मैसेज आई है उस पे काम किया है, उस पे अमल किया है दोनों बल्लेबाजों ने, ऐसा लग रहा है। This one, this is up in there. Is it going to be caught? And the catch has been dropped. It's a no ball as well. It is a no ball. And guess what was going to be on the strike? It's going to be Samir. He will have a luxury. He will have a freedom. And he's going to have the license to kill the ball. He just needs 2 runs to go past his half century. And he can be out except to run out. He will love to hit the ball for the bank. Hits the ball. Is it going to go all the way? Yes, it has gone. That is 6, and that is half century as well for Samir. What a way to go to his half century. Just chipping the ball over mid-wicket and getting a half century. My goodness. Saklan, this man is having a show, and is showing all skills, and is being given a standing ovation from his teammates out there in the dugout. What an innings. 54 of 29. और 29 गेंदों में ये 54 रन बनाए हैं। ये एक ऐसी किरण है जो अगर 20 ओवर्स खेलेंगे तो मुझे लगता है 150-160 के आसपास पहुंच सकती है। ये खेमा है एमसीसी नाइडखाई। There is a dugout of MCC Naidkhai now, very, very pleased with the way Samir is doing the job for him, and Firdaus is also chipping in with some good runs. It's 1-2, 1 for 6. Slower ball, this one has gone. Is it going to go all the way? Just one bounce over the backward square leg region for 4 runs. Some show being put on by these 2 batters, and MCC Naidkhai, they are so pleasing with the things that are going for them now. और ये गेंदबाजी आप देखिए, खराब गेंदबाजी हो रही है। आबिद जो गेंदबाजी कर रहे, फील्ड के हिसाब से गेंदबाजी नहीं कर रहे। वहां से बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी होना चाहिए, फाइन लेग पे खिलाड़ी होना चाहिए, फिर आप ऐसी गेंदबाजी कर सकते हैं। आपने डीप मिड विकेट सेट किया है, अब मुझे लगता है इनको थोड़ा सा स्क्वायर लेग की तरफ होना चाहिए या फाइन लेग की तरफ इस खिलाड़ी को होना चाहिए। और ये रन जो है ये काफी क्रूशियल होने वाले हैं सेकंड इनिंग्स में। 19 runs of the over so far. I believe this has been the most expensive over of this innings, and it can go for some more runs if we have the last ball. Yes, Firdaus, 15 of 9, last ball of the over. Down the track he goes. This is up in the air. Shirazwani not going to drop those catches. Eventually Firdaus departs, and Abid just having some relief till the end of the last ball. और शिराजवानी कैच ड्रॉप करने वाले हैं नहीं, लेकिन आज 3 कैचेस ड्रॉप हुए हैं। इस पे सोचना पड़ेगा, इस खेमे को, इस टीम को सोचना पड़ेगा। ये आप रिप्ले में देख सकते हैं, पोजीशन में आए, गेंद पे नजर थी और अच्छा कैच पकड़ा है। And 7 gone, and here you see on the screen an elderly man. Absolutely, he doesn't know he's on the screen, but he's enjoying. He usually comes here, he frequently visits this very Ghani Memorial Cricket Stadium, Rajouri, Srinagar. He's such a lover of the game of cricket. There he goes. There you go. Wow. और अब पता है कि स्क्रीन पे हूँ अब जो। Yes, now he knows I'm on the screen. Change हुए हैं। Indeed, he knows I'm on the big screen, and he just stands erect now. और बॉस नजर आ रहे हैं। Indeed. In a very bossy style. And just watched his ball. Down the track he goes. He was aiming it here on the mid-wicket. Leading edge, and Wani just making no mistake. But a good innings. A very short cameo of around 18. And that gives some relief to MCC Naidkhai. And out walks to the middle, Mr. Latif. Still no Ayaz Maqbool. बिल्कुल अयाज मकबूल क्यों नहीं आए खेलने के लिए? अयाज मकबूल बड़े बड़े शॉट्स मार सकते हैं, उनको भेजना चाहिए था। और ये आप देख सकते हैं गनी मेमोरियल स्टेडियम से, राजौरी कदल से हम बराह रास्त आप हमें देख रहे हैं। ये हम हाथ हिला रहे हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं हमें स्क्रीन पे। It seems you know, we are just trapped outside behind the curtains. And Sahil Khan into the attack now. 2 overs for 13. No wicket so far. He got a maiden over as well.
Let's see what it is. Good ball. And it's a white ball. Extras have been today, just limited. And eventually those catches, drop catches, still going through the minds of Herons 11 Pulwama. बिल्कुल सोहेल खान ने अच्छी गेंदबाजी की थी नई गेंद से, पुरानी गेंद से डेथ में कैसी गेंदबाजी करेंगे, यहाँ पे इनका रियल टेस्ट होगा। अच्छी गेंद, 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया, 22 की सूरत में 1 रन मिलेगा। लेकिन सोहेल खान अभी तक अच्छी गेंदबाजी करे। रियल टेस्ट आपका कब होता है? जब आप डेथ में गेंदबाजी करते हैं, आप डेथ स्पेशलिस्ट होने चाहिए। लेकिन अभी तक अगर हम यहाँ से बात करें तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सोहेल खान। Sohail Khan just bowling good, and we've got a left-handed batsman out here in the middle, Mr. Latif. And it's going to be some kind of work for the fielders as well. We get a backward point and a deep point as well. A short third man, a long off. In goes Khan. Oh, short of length. That is a very, very dangerous bouncer. Wicketkeeper misses, batsman misses, and MCC Naidkhai will not miss it. 4 runs to them. Just watch it. Oh, that was a very, very nasty bouncer. Sohail Khan just using all his power, and just watch it. He just hit the deck hard. That was a nasty bouncer. Luckily, he just took his head off the ball, and it caught off the head of the wicketkeeper Mehran and goes for 4. शॉर्ट गेंद से टेस्ट करने की कोशिश हो रही है बल्लेबाज को। पता है लतीफ अभी नए आए हैं, तो अगर शॉर्ट गेंद से इनको टेस्ट करेंगे वहां पे विकेट मिल सकता है, और कोशिश अच्छी है सोहेल खान की। 131 for 7. Next ball just plays it on the offside, and he gets off the mark. And it's a good strategy, just trying and bring Sameer on the strike. He's already gone past his 50. And it will be quite great for Naidkhai to just give more of the balls, more of the strike to this man who is on the screens now. He can be pretty handy for the team, Naidkhai. Smashes the ball. Is it gonna go? Yes! That's a beautiful cover drive. Through the extra coverage, and the ball goes into the fence for 4 runs. और क्या शानदार टच में नजर आ रही है, आप रिप्ले में देख सकते हैं। हैंड आई कोऑर्डिनेशन काफी शानदार। ओहो, क्या शॉट है ये। और सोहेल खान गलती कर रहे हैं, पेस देना है नहीं इस पिच पे। अगर आप यहां से कटर्स का इस्तेमाल करेंगे, स्लोअर्स का इस्तेमाल करेंगे, तो आप करामत साबित होंगे। लेकिन सोहेल खान क्या करे, पेस के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं सोहेल खान। And for the first time we see the run rate just going over 8. That is good news for MCC Naidkhai. If they just go on with the same 60, I believe 160 will be on the board. 11 runs so far of this very over. Next ball just keeping low. Chance up and out. No, I believe he was well in. And that's a good running between the stumps. Very, very good running. 17 done. MCC Naidkhai just asking to Astro to bat first. They won 37 for 7. Khan still having 1 over left, with the economy of 7 years gone for 21. Kashyap into the last over of his quota. और स्पिनर्स के साथ गए हैं स्टेज पे, स्पिनर्स के साथ गए, क्या ये मूव अच्छा रहेगा? I believe it's going to be a pretty gamble, but first ball just going for the dot, and that's quite a great move, a brave move, Vishal Azmani. At this moment they know that this batsman will go after every ball, so it can provide them some breakthroughs. And with the ball he just plays it down to the onside, and they just go through for a single. And let's give credit to Sameer's innings. He just kept on going on one side, even though we could see the wicket just scattered on the other side. But he just played beautifully, 62 of 36. That's why MCC Naidkhai are still in the game. बिल्कुल, अगर समीर नहीं होते तो काम तमाम होता, 100 से नीचे स्कोर होता।
समीर पहाड़ की तरह खड़े हैं मैदान पे, लेकिन अभी भी उनको काम करना है। 20 ओवर तक खेलना है और 160 तक पहुंचाना है अपनी टीम को या 170 तक पहुंचाना है अपनी टीम को। In goes he round the stumps now. Just makes it sure, plays it on the onside. Singles not gonna hurt like Pulwama. And on the screens, I believe this is Sohail Khan. Yes, bowled beautifully, caught a catch as well. Sohail Khan is a very great all-rounder who hails from Kangan, Pulwama, who plays for Kangan Strikers as well. Next ball, just aiming to hit it on the onside, and there was no connection. Sohail Khan at your screens once again. This time not cutting it right onto the blade, and Sohail Khan comes from that mid-wicket to the sky-leg region, stops the ball, only singly cruising. I believe it's not Sohail Khan, beg your pardon. Indeed, it is Sohail Khan, but the run rate now comes down a bit. It was 8.18, now it's 7.85. Last ball, only 3 runs. This ball has been played. Is it going to go down to the fence? Oh! It is very sloppy up and from that fielder Abid. It should have been stopped, but it goes over the fence for 4. और ये रन आपको बाद में चुभेंगे। फील्डिंग आज खराब रही है फ्रेंड्स पुलवामा की। गेंदबाजी तो अच्छी रही है, लेकिन जो फील्डिंग है वो काफी खराब रही है। इस पे आपको सोचना पड़ेगा, जो खामियां रही है, जो गलतियां रही है, इसको आपको दूर करना होगा। ये आप देखिए, पावरफुल शॉट था, ये पावर जनरेट किया था इस शॉट में, हाई बैक लिफ्ट के साथ, और रुकनी चाहिए थी वहां पे गेंद, और गेंद बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। And let's talk about Shiraz Wali. At the toss, he did mention we would love to restrict them around 140, 145. Still 2 overs left, and we have 144 on the board. And if they just cross and manage to go 160, I believe things may be quite different for our Prince 11 Pulwama. बिल्कुल, वो स्पिनर्स को लाएंगे और स्पिनर्स का जाल बिछाने की कोशिश करेंगे सेकंड इनिंग्स में, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस पिच को रेड किया है। पता है स्पिनर्स यहाँ पे काम करेंगे। और ये फ्रेंड्स 11 पुलवामा के देखिए आप, गेंदबाजी की बात करें, आबिद में 3 ओवर्स में 32 रन दे 1 विकेट लिया है। सोहेल खान 3 में 21। और अब यहाँ से क्या किसके हाथ में गेंद थमाएंगे? सोहेल खान को ही बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। सोहेल खान कैसी गेंदबाजी करेंगे? समीर सामने रहेंगे, जिन्होंने एक जुझारू पारी खेली है। इस बार उठाया है स्वीपर कवर की तरफ, पीछे खिलाड़ी आ रहे हैं, क्या दूसरे की मांग रहेगी? और विवर थ्रू और दूसरा रन भी मुकम्मल किया। शानदार रनिंग मिड द विकेट समीर और लतीफ की। And these runs are pretty crucial. These runs are pretty crucial. Just 2 of that on the very first ball, so a good start at over number 19. This is going to be crucial over. In goes Khan once again, and keeping low. Mehran just not helping himself to stop the ball, and it goes over the fence for 4 runs. और रन आने चाहिए, रन जैसे भी आए। अभी एमसीसी नादखाई का खेमा खुश होगा, 2-2 हाथ से लेंगे रन, क्योंकि ये बाद में 150 रन भी मुकम्मल हुए। 150 off exactly on the board. 6 of the first 2 balls, and Samir, I believe there was an edge. That's why he just goes on to 69. But no matter, MCC Naidkhai will take the runs how they come. I believe they will be quite satisfied with the score. बिल्कुल, आप काफी खुश होंगे, क्योंकि पहले लग रहा था 120-130 के आसपास सिमट जाएगी इनकी पारी, लेकिन उसके बाद सहारा दिया है समीर ने। वो जो इंटेंट की कमी थी, वो इंटेंट दिखाया है समीर ने। Paul just plays on the onside, only a single. And this is some good score on the board now. MCC Naidkhai, the captain, did mention on the toss this is a 200 plus wicket, even though I believe they can't reach to 200, but the way things started off for them very badly, they have managed to score some good runs on the board for them for the team. Sohail Khan, just 3 balls left of this over, just leaving his crease and not catching it right. Saklan, a dot ball at this critical juncture. That is not going to be great for MCC Naidkhai. बिल्कुल शानदार गेंदबाजी सोहेल की, ये डॉट गेंद स्टेज पे करना बिल्कुल क्रेडिट आपको देना चाहिए। वो लेफ्ट हैंडेड लतीफ सामने, क्या वो बड़े शॉट के लिए जाएंगे? आपने पार्टनर को स्ट्राइक लाएगा, भाई बड़े शॉट के लिए जाना चाहिए। बल्ले का मुंह खोला है, खेला है वहां पे डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, पीछे खिलाड़ी आ रहे हैं। 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया है। एक गेंद फेस करेंगे समीर,
क्या वो स्ट्राइक अपने पास रखेंगे या बड़े शॉट के लिए जाएंगे? Well, I believe he just has to go after the ball. You know, just if he gets maximum runs on this ball, that will be quite beneficial for his team. And let's see what will be the approach of Samir. 70 not out of 41. Down the track. Make sure just hits to the wide of that backward point fielder. And in a hurry the ball just goes over the fence. 4 runs. और बैकवर्ड बॉर्ड की तरफ है चौका बटोरा है 156 7 विकेट के नुकसान पे एमसीसी नाइडखाई 19 ओवर की समाप्ति के बाद। Just watch that replay. Beautifully picked up. Down the track and make sure the ball was outside the off stump. And he just sends it to the backward point for 4. Sohail Khan, his quota 4 overs now made in 33. And MCC Naidkhai very pleased he will be with the performance. 156 for 7 with the 20th over to be bowled. It's going to be Abid Mir. Abid Mir. And on the crease will be the left-handed Latif, who's batting on 7 of 6. And Latif will just give a go on everyone. That will come to him. क्योंकि विकेट सेव करके रखे हुए 3 विकेट्स है तो कोशिश होगी बैकफुट पे आए खेला है और पीछे प्रोडक्शन डी पे मौजूद है 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया और स्ट्राइक पे लाया है द वन मैन आर्मी समीर को जिन्होंने आज वो इंटेंट दिखाया और जो पारी रही है वो काफी शानदार रही है। 74 of 42. I believe with the run rate around, with the strike rate around 180. He has caught the 5 balls to just do the damage. That's time, deep in the crease he goes. I believe, oh, mispeeled. And easy pickings for Samir. This is once again very sloppy effort from the field. And 2 more runs to the team and Samir goes to 76. It's 159 for 7. They need 6s and boundaries. Can we have the rain of that? Now, down the track he goes. And is up in there. And this time making no mistake. Javed Malik, I believe, the catcher. And Samir will have to depart. What a great cameo. That's a splendid knock. A fabulous knocks comes in and 76 of 43. And somehow Abid has got the wicket number 2. He will be given a standing ovation from the very dugout. Standing ovation इसके लिए मिलनी चाहिए और अगर ये जो स्कोर आपने ये देख सकते हैं 76 की शानदार पारी खेली है 8 चौके और 3 मॉन्स्टर छक्के 172 का स्ट्राइक रेट है इस खिलाड़ी के पास जो भी आउट हुआ है समीर स्टैंडिंग ओवेशन मिलनी चाहिए और एमसीसी नाइडखाई अगर खुद को अच्छी पोजीशन में महसूस कर रहे हैं तो क्रेडिट देना चाहिए इस खिलाड़ी को। Absolutely, there we go. Very applauding moment is being applauded. And what a knock. He just played a beauty of a knock. Gem of a knock. His team was struggling at one stage, 70 for 6. And he was the man who just stayed there like a rock of Gibraltar. And eventually it just was held at that deep cover point region. Nevertheless, we've got 3 balls left. And now comes to the center, Ayaz Makbul. Very late, but 3 balls to play. बिल्कुल जिसका इंतजार था वो खिलाड़ी आगे है और पहली गेंद पे जाना पड़ेगा आते ही विकेट प्राप्त किया आबिद ने और सिफर पे जा रहे हैं Ayaz Makbul. Well, it was simply the way to go for. Knowing that only 3 balls left in Ayaz Makbul just had to go for the same. And let's see, Abid is now on this hat-trick. 2 wickets and 2 balls. And Ayaz Makbul departs on a golden duck. But his role is to go with the ball. He's a very great bowler. And they may bring him to start the proceedings as well. बिल्कुल नए गेंद से गेंदबाजी करते हैं और पहली ओवर में गेंदबाजी करने के लिए उनको बुलाया जाता है। आज क्या स्ट्रेटजी रहेगी? क्या पहले स्पिनर के साथ गेंदबाजी होगी? एमसीसी नाइडखाई के जो कैप्टन हैं क्या वो गेंदबाजी करने के लिए स्पिनर को लाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। शाहनवाज बशीर जो कैप्टन है इनके यहाँ पे प्ले में देख सकते हैं अच्छा कैच पकड़ा है और हैट्रिक पे रहेंगे और पूरी पारी भी सिमट सकती है, पूरी पारी आउट हो सकती है अगर यहाँ से आप एक और विकेट देंगे अपनी टीम के लिए। Well, caught already 1 hat-trick, I believe that was from Wasim Raza. And he was on the hat-trick second time as well, but unfortunately his team is out of the tournament. And let's see, can we have the second hat-trick? It's going to be Abid Mir. Last wicket
And this is needed by Abid Mir to just go on with the hat-trick and be the second hat-trick taker. Abid Mir and Muhammad. Just last man out there. Here goes Abid. And that was a beauty of a ball outside top stump. Beaten. And Sakline last over, not producing the runs for MCC Naidkhai. They would have not wanted the same. बिल्कुल 3 रन ही बने हैं और आबिद ने अच्छी गेंदबाजी की है इस ओवर में और 2 विकेट्स जो क्रूशल विकेट्स थे और वो जो शानदार पारी खेले थे, सेट बल्लेबाज थे, उनकी विकेट लेना तो मुझे लगता है क्रेडिट देना चाहिए आबिद को। जो आखिरी ओवर आसान नहीं होता है और जब देखने वाली बात होगी इस आखिरी गेंद पे क्या कुछ रिजल्ट आएगा। इस बार खिलाड़ी स्क्वाले की तरफ क्या दूसरे की मांग रहेगी, दूसरा रन दौड़ लेंगे या नहीं? जी नहीं, एक ही रन मिलेगा और 161 का लक्ष्य मिला है फ्रेंड्स पुलवामा को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए। क्या वो ये काम करेंगे? अगर यहां से कोई गलती करेंगे तो टाटा बाय बाय हो जाएगी इस टूर्नामेंट से। 160 9 विकेट के नुकसान पे तो 161 का लक्ष्य मिला है। क्या अबूर कर पाएगी वो लक्ष्य 161 का? 161 रन चाहिए फ्रेंड्स पुलवामा को इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो जो खेमा है कुछ मशवरा कर रहा है। अगर हम फ्रेंड्स पुलवामा की बात करें कि कौन सी स्ट्रेटजी अब हमें यहां से दिखानी होगी बल्लेबाजी में और किस इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, यहां से देखने वाली बात होगी। तो 160 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पे एमसीसी नाइडखाई की टीम ने। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद फ्रेंड्स पुलवामा की बल्लेबाजी के साथ।